So good evening to all of you. Our next Keynotes lecture series will be given by Dr. Ankesh Kumar. He is currently working as an assistant professor in the Geotechnical Division, Department of Civil Engineering, IIT Palakkad. So I welcome you to this conference, sir. Before joining IIT Palakkad, he worked as an assistant professor in the Department of Civil Engineering, Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat. His research areas include geothermal energy, rock mechanics, underground structure, blast impact loading, and petroleum-related rock mechanics. He did BTech in Civil Engineering from NIT Trichy, MTech in rock mechanics and underground structures from IIT Delhi, and PhD in rock mechanics from IIT Delhi. He received IGS HICO Best Paper Award on Rock Mechanics at Indian Geotechnical Conference in 2015. He reviewed research articles from several journals, including Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, Structures, Geotechnical and Geological Engineering, Geosynthetics International, Geomechanics Engineering, Journal of Geological Society of India, SN Applied Sciences, Scientific Reports, Nature, and etc. So I welcome you, sir, on this conference, and I guess that our participants will get the knowledge from you of your experience. So let us I give this dice to you, sir, to continue. Yeah. Thank you, Saurav. So this presentation is visible to all of you, right? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Okay. Yeah. So today I'm going to discuss about the particular topic, that is rock engineering for geoenergy. Till now, you may not be aware about how this rock engineering is applicable in the field of energy sector. So those things I will try to cover here, and also, as your conference title suggests, that sustainability, that also I tried to include in this particular keynote lecture. So as we all know, energy is an important thing right development, even our day-to-day life, like household uses and all. Energy is everywhere. That each country in present scenario want to become a developed, or the to become developed actually. And even the developing countries like India, we also want to achieve some sort of self coal and petroleum. If you look into the coal, that is mostly 70%, or the geothermal production, not geothermal, the thermal production is from the coal, and it's about 70%. So petroleum is equally important in that aspect. Development suggests that we are also into the solar, wind, and hydropower energy sectors. But if you look into the utilization or energy generation with respect to the non-renewable and renewable energy resources, there is a huge gap is there. And all this solar or wind or even the hydropower, if we'll consider, they all cannot completely replace energy resources. The reason is that due to the limitations, like suppose we want to have a solar plant somewhere in Rajasthan, like if you take the example of Rajasthan, recently some developments are there for the solar plant. But the thing is that for solar plant, solar energy is required. And 24/7 solar energy is somewhat difficult to get. Same thing goes with the wind also. And in the case of hydropower generation, we cannot generate hydropower electricity everywhere in the India. Maybe if you talk about the Himalayan region, we can generate the hydroelectric power, or wherever we have the terrain in such a way that we can store, or we can create a reservoir. So, so the thing is that if we want to become a self-reliant, then switch from the coal, petroleum to some other resources. If we'll talk specifically about India, solar, wind,
and hydropower are one aspect. Then we have the nuclear energy, and apart recent developments are there in the field of geothermal energy also. And apart from that, we have the oil and gas shales. If we talk about the complete Indian basins, different basins, if we'll talk about the Krishna Godavari basin, it's a rich source of shale gas. Same ways in some locations, like if we'll talk about the Assam, sources are also taking over for the energy generation and all. So in my coming slides, I'm going to discuss about how we are going to generate the extract the or extract this petroleum or oil from the shale or gas from the shale, and then how we can utilize all these sources to convert these resources into something sustainable, or you can say the more climate friendly and all those scenarios, how we can convert all those things. One more thing is that, like, if you're continuously using the coal and petrol, in time they are going to finish to switch energy resources. It's going to be the combination of different resources. It's not like only solar, only wind, or only some other resources. It's going to be a combination. So geothermal is also going to play a critical role. It will add small delta towards the energy generation. We are going to leave those wells as it is, but we can utilize actually those abundant oil or gas wells can be utilized in all these aspects. So current scenario is we have this scenario like conventional reservoir or the on. Okay. Okay, so we have the conventional oil and the conventional reservoir rocks condition. So our normal petroleum, whatever we are getting, so that is actually from the conventional oil. Is the scenario in which we have the source rock in which petroleum is developed or formed, and then it moves to the reservoir rocks. So unconventional oil till uh, till Second World War we were not using. In Second World War we started, but due to the environmental impact, uh, good for the utilization. So this process was stopped. But still, there is a scope we can use if we improvise our processes, and then we can utilize this oil shale also. So how these oil shales or shale gas are formed? That is by the deposition. Initially, deposition will take place in the oceans or lakes, anywhere it can take place. Then continuous deposition will happen of the organic and inorganic matrix. This inorganic matrix will be converted to kerosene. Then continuous deposition will, and also there is a with every 1 kilometer, there is an increase of 25 to 30 degrees Celsius in the temperature. So as we go deeper, the temperature and pressure will also change. So at around 150 degrees Celsius of the temperature, this kerosene, which is in the bonded state with the inorganic matrix, will stage, and further it can be converted to gas also. So it can be stored. So this is the process of the formation of fuel also will be formed as stored in the sandstone, which has a more bigger voids.
And to oil or oil shale, we need in the we have the inclined and the horizontal well. Because due to the this horizontal well bore, so it got disconnected in between. Ankesh sir, you switch off your video and just start the presentation, because I think there is some internet issues at your end. Internet is fine, but okay. Okay, so this extraction process, we need to have a well bores. So vertical or horizontal well bores will be there. So from that, we will extract the oil. And to extract the in situ, to extract the oil from the shale, we need to heat it. Suppose if this oil is not converted to the petroleum, the kerosene is not converted to petroleum, then we have to extract. So for the extraction purpose, we need to have a vertical well bores, and then we need to place some sort of heaters. If you look into this image, so these are the heaters, and this is the production well. So the bond between the kerosene and the inorganic matrix will be broken at around 400 to 500 degrees Celsius. So that much high temperature we want to reach, and then the oil will be generated, and that oil we can extract from the production well. And if you look into the petrology of the shale, because we are hitting the shale, so shale are formed by the continuous deposition of the clay deposited in the form of layers. So this shale and shale itself is formed by the layer by layer deposition, and we are talking about the 1,000 meter of the depth. So in situ stress condition, material properties, and the behavior of this material towards the temperature will play a critical role when we are designing these vertical and horizontal well bores. So the tensile strength will also get impacted with the laminations, because it's a layer deposition. So with the lamination, you can see at 30 degree, we have the minimum tensile strength. And same thing goes with your point load strength also. We will have a minimum strength at around 30 degree angles, because what is exactly happening is that when we are loading, when load is applied parallel to the laminations, and that laminations are very weak in tension, so they will split immediately. And if we'll talk about the load applied across the lamination, then lamination itself need to be broken, then only it can split. So thereby it is yielding the higher strength. Whereas in the case of certain angle beta, the shearing is going to come into picture. And shear strength of the shale rocks are much, much lower, even lower than their tensile strength itself. So thereby the at 30 degree angle or 45 degree angle, we are going to have a lower strength as compared to tensile strength as compared to other angles. Same thing goes with the point load strength index also. Point load strength index becomes important because in that you don't need to have a different size of samples and all those things. So it's some sort of standardization by which we can find out even the uniaxial compressive strength also. So now the impact of the organic content on tensile strength is also observed, and it was found if the organic content is very high, the tensile strength decreases. Same thing goes
with your compressive strength also, that also decreases. And other aspect is lamination. If suppose laminations are present, then your uniaxial compressive strength will be lower between 30 to 45 degree of the angle. And the organic content and the temperature both are going to impact the cohesion and frictional properties of the rock. That also we can observe from this particular figure. And then coming to the triaxial compressive strength and the impact of anisotropy on the material strength. So as we discussed that the depth is going to be around 1000 meters. So at that greater depth, whether the this anisotropy impact will be there or not, that was also studied. And it was found that as the confinement increases, the impact of anisotropy decreases. As we can observe this thing from this particular figure, as you can see, if depth confinement is 35 MPa, we have the huge impact of anisotropic angle. But as you increase the confinement, this is becoming better. So with the depth, this impact of anisotropy vanishes. And will be the impact on the texture, weight, and also on the mineralogical properties. As we can see, with the increasing temperature, number of cracks are increasing, and also the color is changing. This change of the color is basically due to the presence of pyrite in the sample. Pyrite is going to be oxidized to iron oxide and all. So we can understand this thing from this particular X-ray diffraction chart. As you can see, the presence of pyrite is there up to 450 degrees Celsius. Same thing goes with kaolin also. But if we'll heat further to the 600 degrees Celsius, pyrite is vanished, and kaolin is also reduced, is also vanished. Height of the peak is at west. So there is a 15% weight loss of the material, that is due to the oxidation of the organic matter and the inorganic matter, materials also like pyrite and kaolin. They are those wells. After certain time, we won't be able to use it. So those wells we can convert to the geothermal energy systems. So we have two type of systems: direct systems, geothermal energy, in which the heat source is very nearer to the ground surface, and we can directly use it for the purpose of heating and also the energy generation. So the reservoirs can be classified as per reservoir temperature or the physical or the excessive. How these hello. Yes, sir. Current scenario is that mostly we are using these energy resources like oil, natural gas, and geothermal is very small in fraction. If you look into it, it's only 0.35% of geothermal energy worldwide we are using. Whereas if we'll compare with other resources, mostly we are going with the non-renewable type of resources. And if we'll talk about the Indian scenario, mostly uh, totally we are on the other resources, very beginning stage. So there is a scope to explore more about the geothermal energy if we'll talk about the Indian scenarios. So this is the complete distribution with respect to different locations, and also as per the sector wise, what is the direct heat applications. So if we look into the scenarios, how we have grown in terms of renewable energy resources,
So if we talk about the geothermal energy after 2020, it is increasing. So geothermal is going to play a critical role in that aspect. So if we talk about the Indian scenario, we have few of the geothermal energy reservoirs, but those reservoirs we can use for the geothermal purpose, but direct geothermal purpose. But apart from that, so how we can get that potential to extract the geothermal energy? So this abundant oil and gas well, and also if we talk about the current CO2 emission norms, we have mostly this CO2 generation from the power sector. And if we talk about the Indian scenario, we are the highest among in the globe for the CO2 emission. So if we are able to control the industry and power sector for the CO2 generation emission, then even we can reduce the CO2 emission, even we can go below the world average also. So thereby we need to switch from non-renewable resources to the renewable resources, and we have to explore all the renewable resources, not only to the specific, but specific resources. So these are the certain reasons where geothermal gradients and high geothermal, the high temperature is present. If you look into the temperature in Himalayas, in one, if your location is around 260 degrees Celsius, Andaman Nicobar is a ground surface. So likewise, we have the different scenarios like 110 degrees to 124 degrees. So all these resources we can use to convert the to get the geothermal energy. Only thing is that we need to work more on 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 the fluid whatever we are going to use for the geothermal process. So these are the locations where some of the geothermal plants or projects are there. They are just in the pilot power plant mode. Only few locations are there. Still, we need to explore more. So geothermal energy extract are there. Application. If we our heat sources are near to the surface, closed loop systems are also there. Then we have the combination of two systems, like if we are generating the power from thermal power plant and from the geothermal also, we can merge two systems also. Likewise, even the geothermal energy system can be merged with solar systems also, or wind systems also. If we talk about the specifically for Kerala region, here we can go with the solar energy system also, and some sort of geothermal systems we can develop. Even though we don't have that much temperature, but the solar energy can be used in such a way that we can heat certain rocks and then we can extract the energy whenever there is no solar energy in those scenarios. So for extraction purpose, we have the coaxial system in which you have the central pipe and the outer pipe. This fluid inlet will be there and outlet will be at the center, and U shape. U shape from one end. The inflow two things are that your geothermal, not geothermal, the fluid itself. Another one is in which rock this geothermal reservoir is present, because both are going to play a critical role when we are extracting the geothermal energy. So these are some other scenarios in which this is hot dry rock, like granite. If heat source is very near to granite, heat energy is stored in wells. These are the orphaned wells, and they are mostly generating the greenhouse gases, which are detrimental to the environment. And US has a huge number of abundant oil and gas wells, so which are creating a lot of issues to the environment. So currently, from the oil wells, if
we are getting the oil. One scenario is direct that oil, if we separate uh, the water from the oil, and oil we can use for our purpose, and the whatever water is segregated, that water is at a certain temperature. So directly this water can be used for the power plant or for the distribution factor, or direct for the direct use that can be done. So these are the certain projects. So now coming to the numerical investigations, what we have started in this particular field. So in this, we started with the coaxial well. So, we took one of the case studies to simulate initial things, so that we will be sure about our numerical modeling and all those things. So we have used the COMSOL multiphysics software. In that, we started the numerical modeling, and we modeled all the rocks, different layers, and then we took initial case of the coaxial well. So that whatever result, so we went forward with our studies by using different heat exchangers. So before that, going into detail of the heat exchangers, we started the study by introducing the nanoparticles into the fluid, because is that what we are going to use, which is going to transport this heat from the heat source to the ground surface. So we started with four different type of nanoparticles: Al2O3, CuO, Cu, and Al2O3 with combination of Cu. So we found that Cu is more efficient as compared to other three nanoparticles. But the issue is that the cost of Cu is too high, whereas the cost of Al2O3 is very low, but it is not that efficient. So thereby we can see that the combination Al2O3 and Cu is a viable substitute for the Cu. So this study we further took up, and we found that then we have changed the ratios from 100% 0% ratio to 25%, 75%, and CU also, all we have considered, and we found that this particular ratio, 25% of Al2O3 and Cu 75%, is giving much better results if we talk about the output temperature. So that output temperature we can use to further heat for further use it in the heat exchangers. Those heat exchangers will be connected to the some turbine or something like that, through which power will be generated. So now we started our study related to U-shaped closed loop geothermal system. Initially, we discussed about the coaxial. Then we went with the U-shape. In the case of U-shape, water will enter. Then at the bottom, there will be the exchange of the heat from the surrounding rock. Then it will exit. So this is going to be the outlet. So here, if you look into it, whatever heat is carried at the bottom, at this point, heat exchange will take. Whatever heat is there, that will be dissipated in the surrounding rock. So then there was the modifications by providing we on a complete depth, but up to a certain depth, which is the critical depth for our scenario. So other aspect is going with the U shape, combining with the coaxial. In place of the insulation, we fixed the coaxial system. So this extra heat, what so this was the modification we have done, and we have the patent for this particular scenario also. So this is the system. So the water will flow from that, and this outlet water to the properties of formation rocks. So different rocks have been considered. Each different rocks will have a different specific heat capacity and also the thermal conductivity. The thermal conductivity and heat capacity are going to play a critical role when we are talking about the heat exchange between solid and the fluid. So if you look into this image, this particular first case,
you have the uninsulated U shape and insulated due to the presence of insulation from the critical depth. There is a heat loss. So with insulation, we have incorporated the coaxial system. So that coaxial system is uses water as an inlet for the U shape. Then for the at this particular scenario. In this, thereby we have suggested this particular modifications for the extraction of geothermal energy from the abundant oil wells. So this is the rock temperature, and different rocks also we have considered. So pyrex, so we have seen the granite and gabbro, they are in the by higher temperature. And same thing goes with your secondary this heat exchanger also. Your granite and other rocks except marl and limestone, they are at the lower side, whereas your pyroxenite is giving the higher temperature of the for the outlet at the outlet. So this is the comparison between the heat exchanger and COP coefficient of performance. If you look into the coefficient of performance, that is varying from 1.05 to 1.15 around that. And insulated U shape and hybrid shape, if you look into the thermal power generation, there is a difference around 20%, 15 to 20% variation was there. So from these results, we can suggest that the existing well bores, because in that you have the vertical portion, then you have the horizontal portion, already it is there. Only thing is that at end of the well, you need to put another vertical portion so that it can be converted to the U shape. And then at your outlet point, you can again introduce the coaxial system so that you can extract more power out of it. So these are the conclusions, like geothermal energy as a feasible substitute for Indian scenario also, and our modified this combined coaxial and U shape is producing higher thermal power as compared to the traditional U shape heat exchanger, and coefficient of performance is also higher as compared to other systems. So yeah, that's it. Thank you from my side. Anyone from the participants may ask the question. Thank you, Ankesh sir, for your wonderful experience. A very detailed information has been given by you on this geoenergy concept. And as a civil engineering point of view, we actually want to know the mechanism behind the rocks that will ultimately going to bear the structural load. So thank you, sir, for this wonderful presentation. Thank you, Saurav. Yes. Okay. Thank you, Saurav, for this opportunity to share my current research, whatever I am doing right now. So we are also focusing on other aspects also, but this geothermal is one of the aspect what we are dealing here at IIT Palakkad. There are a few more things we are doing, like I already discussed few of the things, solar energy and all, and we want to merge the solar energy with geothermal aspects here at, even in, if we talk about the Himalayan region, like at your place, there also there are in certain things can be done in that aspects. It's a Yes, hilly sir. region. Definitely, sir. I will
be in touch with you because we need to do some academic collaborations also from research point Yeah, of view. So maybe after this conference, I will ring you back again to let us have some collaboration research projects like that that can be implemented in the Himalayan zone also. yeah, sure, sure. We will do that. Okay, okay, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you, Saurav. Thank you all. Good evening, Dr. Anjani Kumar Shukla. Good evening. Good evening, Uh, everyone. Welcome you to this international conference of civil materials and environment for sustainability. So this is the last keynote speaker of this conference on day one, and he is the alumnus of IIT BHU and currently the managing director of ASCOM BuildCon Private Limited. So just a small brief of Dr. Anjani Kumar Shukla. So he's currently working as managing director of ASCOM BuildCon Private Limited. He's a alumnus of IIT BHU in the domain of structural engineering, and he is working in the field of retrofitting of structures around the eastern Purvanchal areas as well as from the coastal areas also. And his main focus is how to retrofit the bridges. So he has more than 10 years of industry experience and currently he is working under various government and non-governmental projects. So I welcome you, sir, on this keynote session. And I especially want to learn from your domain that how it's difficult to do work in a laboratory and how it's difficult that same work when it is done in a field. So thank you, sir. Over to you. Sir, please unmute yourself, sir. Oh, sorry. Thank you, Dr. Saurav. Thank you for inviting me in this conference. And thank you. My name is Dr. Anjani Kumar Shukla. I have done my PhD from IIT BHU, and currently I'm working uh, in ASCOM BuildCon Private Limited as a managing director. My company deals in the structural retrofitting, structural health monitoring, and auditing of structures and high-rise buildings. Currently, we are doing few projects in the Bihar. Like as you have seen, the Bihar is sinking in the Kosi River, and the water logging is very high in the Bihar and other zones, which is adjacent to the Nepal. So we are retrofitting few bridges which are about to collapse. Basically, yeah. So the first thing which we are actually my presentation is divided in six parts. In the first part, we will discuss about the reason of failure of bridges. Second, what is the importance of structural health monitoring or regular audits of the bridges? Third one is what is the checklist if you are going to inspect a bridge or any damage or any distress region, what is the checklist which you have to identify whether it is distress or it is just casual distress or any severe distress. Fourth is if you can summarize by your visit by only visual inspection or you need any test like uh, non-destructive, semi-destructive or destructive, all type of tests. What is when you performed any test, then how you will analyze the report of that test, and next and last one is how you will go to prevent that distress. And in the last, we'll see some case studies of the field and some parts of structural health monitoring, the modern structural health monitoring, like wireless sensors and few wireless gauges, few scar monitoring systems, and few satellite monitoring systems, which you will see in the last of the
presentation. So in the most of the cases, this is the statistics of World Bank. The most of the structures which fails in that 50% is share of workmanship error during construction. Why? Because we have stopped producing a quality civil engineers. The second is lack of inspection. Once a structure is built up, nobody is caring up till the structure is showing any distress. So the second part is lack of destruction instruction is contributing when 30% of failure of overall failure in the world. The third is design error, and it is contributing only 10%. I'm saying only because the people thought that the failure is only due to design error. A common man or a layman only think that any structure collapse only due to design error. But this is not true. The structure is majorly damaged due to workmanship error. The fourth and the very reason of worrying is corrosion. Corrosion is one of the highest single phenomena of any structure which causes the damages in any structure. And the worst part is we don't know that the corrosion is harming at so high level. And the fifth is miscellaneous like any type of uh, design and workmanship both. Like some we have given any type of specification, but due to some evaluation error, due to some kind of error, only 2% is that. So what will checklist, what will keep the eyes on which point when we go on the site? The first is approaches. If you see in the Bihar, the bridge is intact, only approach has flood away. Second is protective work. Like any method, either you are making the return wall, or you think the gablins or slow pitching, whatever it is, should be designed properly. It should not be the layman. The third is waterway. Waterway comes under what is the obstruction, what is the abnormal changes flow pattern, what is flood level. The major part is flood level. What is the discharge of nearest river, nearest dam? You have to properly involve a hydraulic engineer in the design of your structure. The fifth is foundation. Next, when you come on the civil point of view, then the foundation is very important. What is the settlement below the foundation? If there is any cracking, any disintegration, any decay, any erosion, you have to monitor this. And clearly, you have to clearly write these things in your report. Next is bearing. Bearing is the one of the major causes which progress to the failures. Like if you just you restrain the moment of bearing, and your beam and your column may get cracked without any reason, without any workmanship failure, without any material failure. Just obtain the moment of bearing, and your all the bearing beams and your columns may get cracked. So what is the type of bearing, whether it is pot PTFE, whether it is elastomeric, whether it is uh, any other type of like paper bearing? Accordingly, you have to check the moment, and you have to check whether it is jammed, it is rotational, it is proper, it is moving or not. Then we have to come on the superstructure. In the superstructure, we have to see piling. Is there any spalling or not? Is what is the spalling uh, 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 trying to elaborate? Spalling is generally a reflection of corrosion. So अगर कहीं पे spalling हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि अंदर corrosion हो रहा है. Any disintegration, any. So these all have to monitor in the superstructure. The next is steel bridges. Steel bridges
में आपको सिर्फ अलाइनमेंट ऑफ मेंबर एक ऐसा चीज है, और वाइब्रेशन, जैसे कई सारे स्टील मेंबर जो फेल हुए ड्यू टू ओनली वाइब्रेशन, उनका जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी था वो हमारे नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से जो मैच करेगा ना स्ट्रक्चर के फ्रिक्वेंसी, देन इट विल इमीडिएटली कोलैप्स। तो एक्सेलेरोमीटर होता है, अभी नाउ आई विल शो इन द एंड ऑफ दिस पीपीटी एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर लगा के हम बहुत आराम से वाइब्रेशंस को चेक कर सकते हैं। देन देयर आर मैसनरी आर्चेस। Masonry assessment, you have to see the condition of joint. Is there any crack on the joint? Any flattenings? Any type of dilapidation in the mortar? You have to proper check. So these are the things which you have to keep a checklist. After this checklist, after your visual inspection, आपको ये पता करना है whether it is sufficient or not. अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको डायलेमा है, आई एम इन अ डायलेमा वेदर इट इज स्ट्रक्चरल क्रैक, इट इज नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक, then you have to go on the testing. There are three type of major testing. First is non-destructive, second is semi-destructive, and third is load testing. And the last one is destructive testing. We generally keep doing the core cutting. We generally start like हमको core test करके पता करना है. Core test would be in the last. So I have not included in this the destructive testing, because if you cut any core in any type of member, then you reduce the moment of inertia. You reduce the section of that member. So we should avoid that. We should uh, we should do these only tests in any type of structure to identify the type of error, the type of failure, the type of distress. क्यों करते हैं हम ये? अगर आपको कोई डाउट है ग्रेड ऑफ कंक्रीट में, M30 का हुआ था, M25 का होना चाहिए था, देन यू कैन गो फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव। आपको लगता है कि पुअर वर्कमैनशिप है, क्यूरिंग सही से नहीं हुआ है, सब ग्रेड स्टैंडर्ड मटेरियल हुआ है, आपको लगता है इंक्रीज इन लोड हो गया, मतलब पहले वहां पे लाइब्रेरी था, अब वहां पे बता रहे हैं कि नहीं, पहले क्लासरूम था, अब बोल रहे हैं लाइब्रेरी बननी है, तो लाइब्रेरी में जनरली लोड आपका बढ़ जाता है, तो आप लोड टेस्टिंग करके उसको पता कर सकते हैं। चेंज ऑफ यूजेज ऑफ स्ट्रक्चर, और अगला है स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग। हम अब आजकल क्या हो रहा है ना कि जैसे कोई सा भी टेस्ट ना आपको ये नहीं बताता कि क्या करना है आगे या क्या करके इसको बचाया जा सकता है। सिर्फ स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग ऐसा एक सिस्टम है जिसके इस्तेमाल से वी कैन सेव द स्ट्रक्चर, लाइक इफ एनी ब्रिज इज अबाउट टू कोलैप्स इन बिहार, ओके, सो नो टेस्ट कैन टेल यू कि इन द नेक्स्ट 4 days योर ब्रिज विल बी कोलैप्स्ड, because if you perform any rebound hammer test on any pier, so it will give you the grade of concrete. It cannot predict कि इसमें कितना वाइब्रेशन हो रहा है, इसमें कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। उसके लिए आपको परमानेंटली स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को इन्वॉल्व करना है। अभी हम लोग एक पटना में एक अप्रोक्सीमेटली 2-3 किलोमीटर का ब्रिज है, उस पर पूरा का पूरा वेलेक्सन इंटरप्राइजेज और कई सारी कंपनियां हैं रोडिक जो उसको बना रही हैं, उसमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका पर्पज सिर्फ ये रहता है कि वो आपको एक बिहेवियर देता है कि वेदर योर स्ट्रक्चर इज परफॉर्मिंग इलास्टिकली, नॉन इलास्टिकली, लीनियरली और नॉन लीनियरली। 2, 3, 4, 5 दिन का हम लोगों ने उसमें रिकॉर्डिंग लिया, 1 महीने का लिया, 2 महीने का लिया, कोई ट्रक आया वहां से पास किया, अब वो जो डिफ्लेक्शन है वो रिकवर कितना कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है, इस बेस पे हम ये बता सकते हैं कि अगर ये इसका डिग्रेडेशन कितने टाइम में हो रहा है और इसको कितना दिन तक हम चला सकते हैं, या इसमें जो सेटलमेंट हो रहा है वो किस स्पीड से हो रहा है और कितना दिन में ये सेटलमेंट दिखने लगेगा, आपको वाइबल हो जाएगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव में रिबाउंड आप लोग जानते होंगे, हाफ सेल, अल्ट्रासोनिक, अकाउस्टिक। सेमी में आता है कैफो एंड कोर। लो टेस्टिंग में 2 तरह के होते हैं, एक होता है यूजिंग डायल गेजेस एंड यूजिंग एलबीडीटी एंड डेटा लॉगर्स, जो कि बहुत मॉडर्न है। अब डायल गेजेस तो कोई करता नहीं है, so we generally do from the accelerometer, from the strain gauges, from the LVDTs, linear variable differential transformers.
So I'm showing you a case study where there is a bridge in the UK. I will not name the location because this is a non-disclosure policy. So we have signed a non-disclosure policy for this bridge. We cannot disclose the name. So this is a bridge. जैसे ही इसको शटरिंग हटाया गया 28 दिन के बाद देयर वेर 22 क्रैक्स इन द ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ स्लैब 12 मीटर का स्लैब और उसमें 22 क्रैक ट्रांसफर डायरेक्शन में तो it was a complete structural failure. When we go through the design, then we found that reinforcement is deficient by 35%. So, and there was a design error and vetted by a famous IIT of India. So there were 5 professors we have that have vetted this bridge, and after that, the bridge was gone under construction. But uh, due to their negligence, and this is the case of 2023, and we have just finished the retrofitting, and now the bridge is open for traffic. So after construction of 4 slabs, when they opened their removed their scaffolding, they found that entire bridge has failed. सब में क्रैक हो गए slabs में. So if you see here in our recommendation, so initially we have given only one line of recommendation that this bridge has to be dismantled. If you see that in the recommendation, the better option is to dismantle. We have improvised in the letter. First, we had write the bridge is to dismantle, but this was the location was very high profile, so there were no chances to be dismantled. Then they asked for remedy. What you can do? So we have properly designed from ACI 440.2R. There is an American code for retrofitting of structure. There is no Indian code available in India, which give you about the strengthening and retrofitting. There is no authorized code in India. So we have used IS 456 and ACI 440 to calculate what is the residual strength and what we can expand. What is the scope for expansion of load carrying capacity? Then we came after analytical modeling, we came to numerical. हम लोग एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर है उस पे आए और उस पे उसी प्रॉब्लम को एक मॉडल बनाया गया. उस मॉडल पे हम लोगों ने इसको सेम गलती करते हुए एनालिसिस को सेम रेनफोर्समेंट दिया. मेशिंग किया गया, कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया गया, क्या क्या कर सकते हैं, क्या तुम लोगों ने किया होगा. एंड देन व्हेन वी लोड टेस्टेड द डिफ्लेक्शन वाज 41.38 mm, जबकि अलाउबल था approximately 8 mm for the dead load, for the live load, and for dead plus live load 15 mm. तो ये तो बहुत ज्यादा था, लगभग 4 गुना अप्रोक्सीमेटली. तो फिर स्ट्रेस देखे हम लोगों ने, स्ट्रेस वाज 3 times than whatever the allowed was. Approximately the formation was 361.8 and the allowable was 110. So the stress was 3 times higher than allowed. So we have designed, then we designed some laminates over the bottom of slabs. These all are in the hypothetical situation. मतलब अभी ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है, हम सब सॉफ्टवेयर में हम लोग कर रहे हैं. हम लोगों ने एनालिसिस में एक लैमिनेट डिजाइन किया जिसको हम लोगों ने स्ट्रेंथ दिया 4000 मेगापास्कल, 4000 मेगापास्कल. हमारा स्टील का होता है 415, बट हम लोग ले गए इसको 4000 तक, बिकॉज जो स्लैब था ना वो ट्रेपोजाइडल था. मतलब उसका टॉप तो था 7.5 मीटर का, लेकिन हमको जो बॉटम मिल रहा था स्पेस वो हमको मिल रहा था, इफ यू सी हियर, वो हमको मिल रहा था ये देश, यहाँ पे हमको मिल रहा था सिर्फ 4.5 मीटर. तो उस 4.5 मीटर के हिसाब से हमको जो इम्प्रोवाइज करना पड़ा वो
4000 MPa का लैमिनेट हमने 1.4 mm थिकनेस पे लगाया और स्पेसिंग रखा 200 mm सेंटर टू सेंटर। फिर हम लोगों ने प्रपोज किया, बट they said the agency which was making the bridge, that was the government agency, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम ऐसे नहीं कर सकते, बोलना आसान है बट पहले आप एक इसका मॉडल बनाइए। मैंने कहा सर ये मॉडल है, दे नो, जस्ट कुछ और कंक्रीट चाहिए था उनको। देन हम लोग IIT में गए और IIT BHU में एक मॉडल बनाया गया, सेम उसको डिजाइन, सेम जो गलती उन्होंने किया था अंडर रेनफोर्स, अंडर नॉट अंडर रेनफोर्स, रेनफोर्स डिफिशिएंट स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके हम लोगों ने उसी तरह का बीम बनाया और 4 केसेस लिए। we have taken the 4 cases. In the first case, the beam of size 200 into 200 into 2 meter containing the same reinforcement arrangement with no strengthening measure, हमने उसमें कोई भी strengthening का वो काम नहीं किया। Then सेकेंड केस लिया और सिर्फ बॉटम में एक कंपोजिट लैमिनेट्स लगाया और छोड़ दिया। थर्ड केस में लिया कि हमारा एक्सपीरियंस ये था जो इस फील्ड में काम करते हुए कि ना तो कंक्रीट फेल होता है ना लैमिनेट फेल होता है, वो जो उसमें ग्लू लगा होता है ना, ग्लू फेल कर जाता है। देन वी ट्राई टू मोनोलिथिक होल स्ट्रक्चर। देन हमने क्या किया, कंपोजिट लैमिनेट्स के साथ उसको रैप कर दिया पूरा अपने गटर्स को। एंड देन फोर्थ केस हमने क्या किया कि जो उन्होंने स्टील दिया हुआ था ना 70%, 65%, उस स्टील को पूरा निकाल दिया। कोई रेनफोर्समेंट इसमें था ही नहीं। हम ये मान के चल रहे थे कि मान लीजिए रेनफोर्समेंट इनएक्टिव हो गया, तो जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि दिस इज द मैटर ऑफ पब्लिक सेफ्टी, वंस द ब्रिज वाज ओपन किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने सब रेनफोर्समेंट को निकाल दिया, सिर्फ कंपोजिट लैमिनेट्स को लगाया और उसको रैप कर दिया। ये चारों केसेस हैं। ये एक टूटा जो जिसमें हम लोगों ने कोई रेनफोर्समेंट नहीं डाला था, वो टूट भी गया। देन वी कास्टेड अगेन एंड so these are the 4 types which we have casted. So now the problem was we have to arrange a laminate which give the strength of 4000 MPa at the thickness of 1.4 mm and width of approximately 500 mm. So from all the way of China, so China is a country which can give you anything. Just you have to be clear कि आपको चाहिए क्या, आप उनको बता दीजिए। तो हम लोगों ने हॉर्स कंपनी से एक टाई अप किया इस प्रोजेक्ट के लिए और फिर उनसे ये लैमिनेट को डिजाइन करवाया जिसका स्ट्रेंथ 4000 से 5000 के बीच में हो, और फिर उनसे हम लोगों ने इसको मंगाया। इसको जो सेकेंड और थर्ड केस को लैमिनेट्स और फाइबर के लिए तैयार किया गया, उन गर्डर्स को, और उनपे लैमिनेट्स को लगाया गया और रैपिंग किया गया। इसमें आप लैमिनेट देख रहे हैं ये, और इसमें आप ये रैप देख रहे हैं। अब हम लोग इसको ले गए 3 पॉइंट लोड टेस्ट की तरफ। हम लोग को देखना था कि अगर हम लोड लगा रहे हैं तो 23 जनवरी में से ये शुरू हुआ था ये। तो हम लोगों ने देखा ये विदाउट स्ट्रेंथनिंग में ये इसको टेस्ट किया। टेस्ट करने पे हमको जैसे हमारे क्रैक्स डेवलप होते हैं अंडर एनफोर्समेंट बीम के, सिमिलर पैटर्न में क्रैक दिखे, और उसका जो लोड कैपेसिटी था वो आया 1.5 टन, 15 किलोमीटर। फिर ये केस 1 है, जबकि जो गलती इन्होंने ब्रिज में किया था ना, वही गलती वाला गटर है ये। दूसरा केस हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने बॉटम में एक लैमिनेट लगा दिया था विद लैमिनेट्स ओनली। इसको टेस्ट किया तो अच्छा, यहाँ पे हमने ये लगाया हुआ है द डायल गेजेस कि हम लोग उसको डिफ्लेक्शन को रिकॉर्ड करना था, कितना डिफ्लेक्ट कर पाएगा कनेक्शन के टाइम पे। तो दूसरा जो लगाया, इसका जो गया आप देख रहे हैं ये 45 किलोमीटर, 4.5 टन, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम हो गया। हमको 3 टाइम नहीं चाहिए था, हमको 30% चाहिए था, आधा से भी कम, बट ये 3 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट हमने तीसरा किया जब उसको रैप कर दिया सेकंड वाले केस में, तो ये चला गया 86 किलो न्यूटन अप्रोक्सीमेटली 8.6 टन, और ये अभी तक ये क्रैक नहीं हुआ था। बट हमारे जो एक शारदा जी हैं उन्होंने बंद कर दिया डर के मारे, ये बम की तरह फट जाएगा, ये जब बीम टूटेगा
क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में देखा नहीं था कि कोई भी बीम 2 मीटर का इतना लोड ले लेगा। तो चौथा जो केस था, यहाँ देखिए लिखा नो स्टील रेनफोर्समेंट, इसमें कोई रेनफोर्समेंट है ही नहीं, केवल फाइबर्स हैं और लैमिनेट्स हैं। इसको जब टेस्ट किया हम लोगों ने तो इसका स्ट्रेंथ आया अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर के टन के आसपास है। के टन आने पे भी हमारा जो पर्पस था सॉल्व हो रहा था, तो हम लोग इसको लेके गए साइड पे। अच्छा, इसका रिकवरी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे स्ट्रक्चर का ना डिफ्लेक्शन होना या टूटना कोई बहुत खराब बात नहीं है, अगर वो रिकवर हो जा रहा है इमीडिएटली। जैसे रबर होता है ना, रबर तो डिफ्लेक्ट करता है, जैसे आप छोड़ते हैं वापस अपने शेप में आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये केस नंबर 1 है जो कि हमारे कन्वेंशनल रेनफोर्समेंट से बना है। ये तोड़ने के बाद पूरा उसी शेप में रह गया, वापस नहीं आया, बिकॉज वो नेकिंग और उसके बाद फेलियर जोन में चला गया था, अल्टीमेट फेलियर जोन। बट आप देखेंगे ना केस 2, 3 और 4, तो इनमें आपको थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। ये सब के सब रिकवर करके, ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा रिजल्ट रहा। फिर हम लोग गए इसको साइड पे एग्जीक्यूट करने। जब हमने पहला, हमारे साथ दिक्कत क्या था उस टाइम पे कि हमको ये पता करना था कि जो हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ है ना, वो आ, हमने लैमिनेट लगा दिया, ग्लू लगा दिया, फाइबर लगा दिया, वी हैव अप्लाइड ऑल, बट वेदर द कंक्रीट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। कंक्रीट ही कमजोर रहेगा तो क्या होगा? आप लगाएंगे और जहां पे आप उसको एंकरिंग करेंगे, जहां पे आप ग्लू करेंगे, वहीं से छोड़ देगा, कंक्रीट ही निकल जाएगा। तो अल्टो गाड़ी में अगर हम हमर का पहिया लगाएंगे तो जहां पे आप लगाएंगे वहीं से निकल जाएगा वो। ऐसा नहीं है कि हमर का पहिया लगा देने से सिर्फ वो 200 की स्पीड चलाएगा, इंजन भी अच्छा होना चाहिए। तो हम लोगों ने पहले चेक किया कि इसका कैपेसिटी क्या है, तो ठीक ठाक था, M45 था, तो ये हुआ कि ठीक है। देन स्टेजिंग लगाया गया एंड इसको पूरा, ये आप क्रैक देख रहे होंगे, ये सब क्रैक है, ये सब क्रैक्स है। इसको पूरा साफ वाफ करके, बिकॉज डस्ट, अगर डस्ट रहेगा तो आपका स्ट्रेंथ 20 से 30% घट जाएगा। फिर पॉलीमर ये लगाया गया, प्राइमर। प्राइमर का काम ये होता है ना कि ये बता दे पुराने वाले कंक्रीट को कुछ नया आने वाला है, तैयार हो जाए, बॉन्डिंग अच्छा कर देता है। अब हमारे पास एक चैलेंज और था। अब देख रहे होंगे ना, ये जो जोन है ये बियरिंग जोन है। बियरिंग के बाद भी जो स्लैब है ना, अगर आप इसके आगे आप लैमिनेट फुल लेके जा नहीं सकते, बिकॉज आपको प्रीस्ट्रेस करना है, बिकॉज सैग हो गया है। तो प्रीस्ट्रेस मशीन और इसको आप अंदर लेके जा नहीं सकते। अब अगर आपने पूरे स्लैब को स्ट्रेंथन कर दिया, बट ये लास्ट का अगर आपका कुछ मीटर रह जाएगा, तो ये यही से क्रैक कर जाएगा, वापस बियरिंग के ऊपर क्रैक कर जाएगा। तो हमने बियरिंग के ऊपर लोड ट्रांसफर के लिए हमने पोल्टराइज्ड कुछ कार्बन फाइबर थे, उनको लगा के उस लोड को जो कि पूरे स्लैब का आ रहा है, उनको बेरिंग के एंड तक लेके गए, इनको काटे, टैचुल मिक्स करके ये लगा दिए। तो अब देखिए इसके लोड ना आराम से, दीज आर द फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो इसको ये फ्लेक्सिबल आराम से यहाँ तक लेके गया, क्योंकि हम लोग जो लैमिनेट लगा सकते थे वो सिर्फ यहाँ तक लगा सकते थे। अब लैमिनेट का 200 पे मार्किंग हुआ, ये है डियर लैमिनेट, एंड इसको काटा गया, इस पे इपॉक्सी लगाया गया, एक ऐसा हार्डन ग्लू जिसका कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इतना सफिशियंट हो कि वो 4000 MPa को लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि हमारा फेल तो यही से करेगा। फिर इसको हम लोगों ने ग्रिपर लगाया, और ग्रिपर लगा के उसके बाद प्रीस्ट्रेसिंग किया, और प्रीस्ट्रेसिंग करके परम हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम प्लेट, HSFE प्लेट होते हैं, जो कि सिर्फ हिंडाल्को या इंडस्ट्रीज में ऑर्डर पे बनाए जाते हैं, जिनका जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 300 ईयर्स होता है इनका जो लाइफ स्पैन होता है। इनको लगा के प्रॉपर बोल्टिंग कर दिया गया, ये आप देख रहे होंगे, ये प्रीस्ट्रेसिंग हो रही है, क्योंकि क्रैक आए हैं इसका मतलब कि आपका गर्डर स्टैक किया हुआ है, स्टैक किया हुआ है तो आपको उसको वापस उसी अवस्था में भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर इतना से सैगिंग है और लोड इतना है, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए कितना आपको
एक लैमिनेट पे कितना लोड लगाना है. Then we calculated the load was came approx 4 tons. We applied the processing force of 4 ton on each laminate, and then after processing we just glued the plates. You see, after processing we glued the plates and anchored all. After gluing and pasting and processing, we release the temporary plates. Now we applied the primer, and after that we applied the polymer modified mortar. Why? To avoid the dynamic vibrations which is coming in the bridge. दो there are two things. First, हमको इसको पब्लिक से बचाना है कि पब्लिक लगेगा कि ये नीचे क्या हो रहा है. There are so many much media and all. तो पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार वाइब्रेशन को बहुत आराम से ले लेता है. एंड दूसरा, आपको बॉटम से कुछ दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई काम हुआ है. मेश वायर लगाए गए, दीज आर द 1:5:15 के रेशियो में पॉलीमर डाला गया और डाल के इसको प्रॉपर, ये अभी का शेप है जो उसमें है. तो उसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि वहां पे क्या हुआ. और जो हम लोगों ने जो थिकनेस कम किया है, जो आपका कवर था वो सिर्फ 1.4 mm आपका फाइबर का और उसके बाद 10 mm और. तो ब्रिज का जो हाइट था ना, उसका जो कंप्रोमाइज हुआ वो 15 mm से कंप्रोमाइज हुआ. तो अगर 5 मीटर का हाइट है, क्लियर हाइट अगर 5 मीटर का है फ्रॉम द ग्राउंड एंड 15 mm कंप्रोमाइज हो गया, तो उससे मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला. देन अब हमको लोड टेस्ट करना था कि विदाउट लोड टेस्टिंग तो उसको खोल नहीं सकते थे. लोड टेस्टिंग होगा क्लास ए के लिए. तो हमने IRC 51 के हिसाब से एक इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाया उसका और एक अरेंजमेंट ऑफ व्हीकल्स उस हिसाब से किए 5 एक्सल के और उन पे लगा दिया. ये सिमिलरली हमने वो लोड लगा दिया अप्रोक्सीमेटली 120 टन और ये बॉटम में सेंसर लगा दिए LVDTs लगा के हम लोगों ने चेक किया. द डिफ्लेक्शन वाज अप्रोक्सीमेटली 1 mm. तो हम लोगों ने जो एनालिसिस से कैलकुलेट किया था वो अप्रोक्सीमेटली 2 mm था आफ्टर रेट्रोफिटिंग. बट साइड पे 1.5 1.7 के अराउंड 24 आवर लोडिंग पे ये आ रहा था. देन वी ओपन द ब्रिज. अब जो हमारा दूसरा सेगमेंट है कि अगर हम लोग को इस तरह के कोलैप्स से बचने हैं या इस तरह के डिटोरेशन से बचना है, तो क्या क्या हम लोग स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग में क्या क्या कर सकते हैं. देखो, तो सबसे पहला जो दो तरह के होते हैं स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग. द फर्स्ट इज, जस्ट सेकंड, जब आपका स्ट्रक्चर बन रहा हो बिफोर कास्टिंग ऑफ द कंक्रीट, उसमें रेनफोर्समेंट के साथ हमने स्टर्न गेजेस को लगा दिया, वायर को अपने डेटा लॉगर के साथ कनेक्ट कर दिया. यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारे वो है लॉगर्स हैं. इनको जैसे अभी इरेक्ट कर रहे हैं, इरेक्ट करते समय ही उसको लगा दिया, लगा के और लॉगर के साथ कनेक्ट कर दिया. ये सोलर पैनल्स है, सोलर के साथ इनको जोड़ दिया ताकि हमको बिजली का सप्लाई कौन करेगा. सोलर पैनल से ऑटोमेटिक एक सिम कार्ड लगा दिया और उसके साथ ये हमें अब 10 साल 15 साल जो भी आपका जैसा आपका क्लाइंट पैसा दे रहा है उस हिसाब से आप उस प्रिसीजन का, उस क्वालिटी का आप वो लगा दीजिए और लगाने के बाद उसको छोड़ दीजिए. अब आपको एक सर्वर मिलेगा, जैसे मोबाइल का सिग्नल आता है वैसे एक सर्वर होगा. वो आपको हमेशा आपका अगर साइट है हिमाचल में और आपका ऑफिस है दिल्ली में, तो आपको दिल्ली में बैठ के आपको डेटा मिलता रहेगा एवरी सेकंड का कि हवा अगर शाम को 4 बजे चल रही है और उस टाइम पे कोई ट्रेन जा रही है, तो जो वाइब्रेशंस इंड्यूस्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ रेल व्हील्स, ड्यू टू वैगन्स एंड ड्यू टू एयर, इन तीनों को मिला के जो मैक्सिमम हो रहा है वो क्या हो रहा है और नेचुरल फ्रिक्वेंसी से कितना दूर है या कितना पास है या डिफ्लेक्शन में कितना वेरिएंस है, तो ये आपको समझ मिल जाएगा. दूसरा है वायरलेस टिल्ट सेंसर. अगर आपने बियरिंग पे लगा दिया तो बियरिंग कितना टिल्ट कर रहा है, कितना आपका रोटेट कर रहा है, ये आपको मिल जाएगा. इससे आप डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं. डिफ्लेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम
इस टिल्ट सेंसर को बॉटम में लगा दें, बॉटम ऑफ योर। अच्छा, ये अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इसका रेफरेंस क्या होगा। तो इसका रेफरेंस होगा सैटेलाइट। सैटेलाइट का जो पोजीशन होगा लगाते समय और जब आप रीडिंग ले रहे हैं उस टाइम पे, ये पूरा ऑटोमेटिक है। तो उससे हम रेफरेंस लेकर के और आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये कितना डिटोरिएट हो रहा है या कितना मूव कर रहा है। नेक्स्ट है वाटर लेवल इंडिकेटर। एक लेजर टाइप में एक सेंसर होता है, उसको लगा देते हैं अपने पियर के ऊपर। जैसे बिहार में इसमें बहुत जरूरत है, रातों रात पानी जो है बढ़ जा रहा है, सो रहे हैं कुछ और। अब सपोज करिए कि 4 इंजीनियर और 300 नदियां हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि वो जाके 300 नदियों को पता कर पाए। तो एक ही टाइम पे आपको मालूम हो जाएगा ऑल द 300 में कि आप किसी बीच में एक जगह लगा, जहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर मैक्सिमम है, वहां पे आप लगा सकते हैं इसको। लगाते ही आपको मालूम हो जाएगा कि इनके कितना ज्यादा इनमें वो आ रहा है, वाटर लेवल कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, ये आप पता। Excuse me, sir. या Pardon me. What is the cost of approximate cost of these type of sensors? For example, we want to install this water level indicator wireless sensor. जैसे वाटर लेवल जो इंडिकेटर्स है, इनको अगर हम बात करें, वायरलेस दो तरह के हैं, एक तो वायरलेस है और एक तो हम्म। वायर्ड है। तो अगर आप वायरलेस की बात करें तो लगभग 50,000 रुपए का एक आता है, 50,000 रुपीज। Okay. लेकिन कॉस्ट ये नहीं है, कॉस्ट है इसको मेंटेन करना, 5 साल 10 साल या 15 साल या 20 साल। ठीक है, तो 20 साल के लिए अगर आप वेबसाइट का डोमेन लेंगे, जो जिस वेबसाइट से आप डेटा लेंगे, मैंने मान लीजिए मैंने www.escombuild.com पे ये डेटा मैं ले रहा हूँ, कि वेबसाइट को मेंटेन करना पड़ेगा। एक उसमें आप सिम कार्ड लगाएंगे जो हर दिन रिचार्ज होगा, एक वहां पे आप प्रोटेक्टिव सिस्टम लगाएंगे, कोई चोर उसको उखाड़ के लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इन सब का कॉस्ट उसमें ऐड होता है। बट इनका ये एक तरह के लेजर लाइट्स हैं, अपने अपने कॉलम पे लगा दिए। ठीक है, अब वो हमेशा लेजर लाइट आपके वाटर लेवल के सरफेस पे, अपर लेवल पे वो टच कर रहा है। जितना भी वो टच कर रहा है आपका लेवल वो है। ठीक है, जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा, लेजर लाइट का डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, एंड यू विल नो कि ये कितना वो है। जैसे स्ट्रेन गेजेस है, अब स्ट्रेन गेजेस अगर आप वायर्ड स्ट्रेन गेज ले रहे हैं तो हमें लगता है 1,000 रुपए का आता है। आप वायरलेस ले रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 हजार का आता है एक। ठीक है, तो अब वायर स्ट्रेन का क्या है, आप लगाने के बाद ये सिंगल यूजेस है केवल। जैसे जो 1,000 रुपए का आते हैं, एक बार में लगाया, स्ट्रेन हुआ, खराब हो गया। बट अगर आप वायरलेस ले रहे हैं और आप इसको मल्टीपल यूज के लिए ले रहे हैं, ठीक है, कि हर एक, जैसे आपने कास्टिंग के टाइम पे ना आपने रेनफोर्समेंट के साथ इसको टाई कर दिया और फिर उसमें कंक्रीट को काट कर दिया। ठीक है, काट, अब जैसे कोई ब्रिज बन रहा है, पटना में केबल से ब्रिज बन रहा है, अब उस ब्रिज में आपने जो उनके केबल्स हैं, उस केबल को जब उस बॉक्स में डालते हैं ना, केबल से ब्रिज में, जैसे आपने देखा केबल से ब्रिज, सारे केबल एक बॉक्स में होते हैं। उन केबल के बॉक्स में डालने से पहले आप उसको चिपका दीजिए। ठीक है, चिपकाने के बाद उनका डेटा लॉगर कहीं बॉटम ऑफ ब्रिज में छुपा दीजिए, चिपका दीजिए, और अब वो आपको 10 साल 5 साल तक रीडिंग देता रहेगा। जितना भी तनाव होगा ना, ड्यू टू विंड, ड्यू टू ट्रैफिक, वो देता रहेगा। अब डिपेंड करता है आपको 1 साल के लिए चाहिए। जैसे क्या होता है ना कि क्लाइंट बोल रहा है कि जब आप प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करिए, हैंड ओवर करने के बाद 2 साल तक आप उसको हमको दे दीजिए, तो उसमें जो क्वालिटी ऑफ स्ट्रेन लगते हैं, स्ट्रेन गेज, वो अलग होते हैं, उनके प्राइस अलग है। और कुछ के होते हैं कि आप बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर बीओटी मॉडल पे हैं, तो वो 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, तो उनके कॉस्टिंग अलग है। तो रिसर्च पर्पज के लिए ले रहे हैं, एक बार केवल यूज करना है, यूज एंड थ्रो करना है, तो 500 रुपए का आ जाएगा, 700 रुपए का आ जाएगा। आप 10 साल के ले रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट 4 लाख 5 लाख रुपए का आएगा, तो 500 रुपए के लिए 5 लाख। ठीक है, इतना वेरिएशन है, इतना वेरिएशन। थैंक यू सर। ये देख रहा है, ये डेटा आ रहा है, एक हम लोगों ने एक ब्रिज का किया था, ये एक पूरा डेटा आ रहा है। जैसे यहाँ पे आपका ये केबल से ब्रिज है, इस पे लोड लग रहा है, लोड लगने के बाद ये आपका सेंसर है। ठीक है, यहाँ से आपको आपने कुछ भी जब भी लोड देंगे ना, तो देखिए यहाँ पे उसी सेकंड में ये देख रहे हैं आप, ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन जो अभी हमने दबाया ना उस पे, उसकी वजह से उसकी लाइन आ रही है। तो जैसे कोई ट्रैफिक निकला, कोई जैसे विंड आया, कुछ भी आया, तो आपको इमीडिएटली मालूम हो जाएगा। लेकिन इस डेटा का हम करेंगे क्या?
इस डेटा का हम ये करेंगे कि जैसे हमने 20 से 25 दिन का डेटा ले लिया या हमने एक मानसून का डेटा ले लिया, अब इसको ना सिंक्रोनाइज कर दिया कि हमको 4 से 5 के टाइम पे मैक्सिमम ये आ रहा है, तो हम उस टाइम पे जबकि विंड एकदम ज्यादा है तो हम जो ट्रेनें उस टाइम पे निकल रही है उनका स्पीड हम कम कर सकते हैं, सो दैट कि हमारा ब्रिज जो है जो 10 साल चल रहा है 15 साल चल जाए। बिकॉज अगर हम, हाँ, केवल केवल 4 से 5 के बीच में, जबकि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं या ऐसा कुछ, अगर हम वो कर पाए तो इसका हेल्थ मॉनिटरिंग का यही है। या अगर वो बार बार नॉन लीनियर जोन में जा रहा है, देन हम स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं इस हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम से। जैसे हमको लग रहा है ना कि बार बार ये 120 पे वंदे भारत, हम लोग कई सारे जोन्स में भी ये वंदे भारत का टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वंदे भारत के जाने से हमारा जो स्ट्रेन है ना वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो लिमिटिंग स्पीड क्या होगा ये डिफाइन करना। तो आप 90 के, 100 के, 110 के, 120 के स्पीड से उस पे रन करा के व्हाट विल बी द लिमिटिंग स्पीड ऑन दैट ट्रैक, वो हम लोग कई सारे प्रोजेक्ट्स भी कर दे रहे हैं। ये आप मालूम कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी ट्रेन की स्पीड को कम ज्यादा, इनसे बहुत पुराना कोई रेल है, 50 साल पुराना रेल है, तो उसमें आप सेंसर लगा करके पता कर सकते हैं या उनको लगा के छोड़ सकते हैं, ताकि जैसे वो खराब होने की कंडीशन में। अच्छा, इसमें एक अलार्मिंग सिस्टम होता है। आप एक आप थ्रेशोल्ड लगा दीजिए कि दिस इज द थ्रेशोल्ड लिमिट, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली अलार्म देना शुरू कर देगा वो आपका सिस्टम कि आपका स्ट्रक्चर खतरे में। अगर कोई ओवरलोडेड ट्रक भी जाएगा तो पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। एक्सरेशन एक आता है एक्सरोमीटर, जैसे कि एक हम लोगों ने ये दूध के लिए किया था, दूध की फैक्ट्री थी, तो उनकी पाइप्स में जैसे ही मिल्क जाता था ना, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा था। तो ये अमूल का था, एसेप्टिक मिल्क चलनी फैक्ट्री में। इसमें हम लोगों ने वाइब्रेशन सेंसर लगा दिए। एक्सरोमीटर होता है जो 3 डायमेंशन होता है, एक्स, वाई और जेड, तीनों डायरेक्शन में आपको ये फ्रीक्वेंसी, जो सिंपल सा फॉर्मूला है यूपी इक्वल टू न्यू जी कॉस 2 पाई एफ होता है, उससे आप वाइब्रेशन लेकर के और इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस वाइब्रेशन से, जैसे एक नॉर्मल इंसान है उसको कितने वाइब्रेशन पे वो जब खड़ा है उस फैक्ट्री में तो उसको नॉर्मल लग रहा है। जैसे हम ब्रिज पे खड़े होते हैं कई बार, तो वाइब्रेशन को नॉर्मल लगता है। इसकी प्रॉपर एक रिसर्च है कि हाँ, अगर हमें इस वाइब्रेशन तक हमें पता नहीं चलेगा या पता चलेगा भी तो हमको डर नहीं लगेगा, और इस वाइब्रेशन पे जाने पे ही हमको डर लगना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें जैसे हम जानते हैं कि अगर हम अभी रुक किसी जाओ, को कभी कोई आ जाए। इसको अगर हम स्टिफ कर दें इस सिस्टम को, या हम अपना जो फ्लो ऑफ मिल्क है उसको थोड़ा सा कम कर दें, तो हम इस वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो डायनामिक डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसको आपको एक्चुअली कंट्रोल करने के लिए या उसको जानने के लिए या कोई फेल्योर होने के लिए, मैक्सिमम जो ब्रिजेस होते हैं जो 800 मीटर से ऊपर हैं, उनमें फेल्योर का एक रीजन होता है वाइब्रेशन। जो गंगा पे या जो बड़े घाघरा पे, इन लोगों पे जगहों पे जो फेल्योर ऑफ ब्रिजेस है उसमें वाइब्रेशन का बहुत रोल है। वो बार बार पटकते 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 ना आपको बियरिंग के आसपास गटर में क्रैक हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको स्पीड का लिमिटेशन लगाना है, लोड का लिमिटेशन लगाना है, ये सब करना है। और उसकी स्टिफनेस भी आप बढ़ा सकते हैं विथ स्ट्रेंथनिंग मेथड। इंक्लाइन सेंसर है, इसको आप बियरिंग पे लगा, एक सेकंड, ये है हमारा जो अभी हम लोगों ने लगाया था। इसको आप लगा दीजिए और जैसे ही ट्रेन जाएगा, क्या आप इसमें देख रहे होंगे कि जितना भी इंक्लाइन करेगा वो उतना हमको ये पूरा रिकॉर्ड, यहाँ पे हमने लगा दिया ये, एक सेकंड, ये हमने लगाया, और जितना भी इंक्लाइन करेगा ये रेल के गुजरने के बाद ये हमको मालूम हो जाएगा। अब कितना इंक्लेशन अलाउड है, जो हमारा रेलवे के कोड्स है IRS 133 में, उसमें कितना अलाउड है वो हम लेकर के, हमारा लिमिट कितना जा रहा है उसको हम एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं कि हाँ, और रेलवे को दे देते हैं कि आपका इंक्लेशन इतना, जिसे आप देखिए ना डीरेल हो जाता है या अपनी पटरी से उतर जाना, कहीं उसको पलटी खा जाना, इमरजेंसी ब्रेक लगाने का लिमिट कितना है, ये सब आप इससे मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेम, मैंने बता दिया आपको स्टेम मेजरमेंट का पूरा फंडा। कहीं पे भी लगाइए, जितना भी खिंचाव होगा ड्यू टू लोड वो आपको मेजर करके दे देगा। डिफ्लेक्शन मेजरमेंट, डिफ्लेक्शन में आप लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल, जैसे बियरिंग का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये बियरिंग के पास आपने इस अरेंजमेंट में लगा दिया, जितना बियरिंग डिस्प्लेस करेगा
उतना आपको मालूम हो जाएगा। इससे क्रैक प्रोपागेशन, बेरिंग का सिस्टम और एक्सपेंशन ज्वाइंट, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक्सपेंड कर रहा है, तो 40 में आपने दिया है एक्सपेंशन ज्वाइंट को और वो 50 रहा है, और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका बेरिंग बार बार खराब क्यों हो जा रहा है। इसलिए खराब हो जा रहा है कि आपका एक्सेसिव वहां पे मोमेंट हो रहा है। तो ये आपको पता चलेगा जब आप डिफ्लेक्शन सेंसर लगाएंगे आपकी बेरिंग के ऊपर, कि कितना मूवमेंट इसमें, एक्सपेंशन ज्वाइंट के ऊपर सॉरी, तो कितना तक वहां पे जो गाड़ी आ रही है ना, वो जब अगले वाले स्पैन को पुश कर रही है तो कितने से वहां पे टॉर्सन वो जनरेट हो रहा है, कितने से आपका टॉर्क जनरेट हो रहा है, ये मालूम हो जाएगा आपसे। तो आप डिजाइन डेटा से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। ये है कुछ लोड सेल्स जो हमको लोड सेंसर्स हैं, जिसमें कि हम जैसे प्री स्ट्रेस करते समय ना, इसको हम, ये केबल्स है और प्री स्ट्रेस करने के जस्ट बाद उसको हमने चिपका दिया अपने केबल्स से और ग्राउंड करके लगा दिया। अब जैसे जैसे प्री स्ट्रेस लॉस होगा वैसे वैसे हमारा सेंसर रिलीज होगा और वो डेटा देगा हमको। तो ये हमको मालूम हो जाएगा कि अगर कोई केबल ब्रिज है या कोई ऐसा कोई स्ट्रेस किया हुआ कि प्री स्ट्रेस केबल है, तो वो कब अपना स्ट्रेंथ कम कर रहा है, कब अपनी क्षमता को खो रहा है, दैट वी कैन नो। ये हमने BMRCL बैंगलोर में, बैंगलोर मेट्रो के लिए ये उनके यहाँ पे ये लगाया हुआ है, ब्रिज Sir, स्टार माउंटेन। sir, I do Hello. have one question. या Yeah. Sir, do we use some sensor in the railway slipper also? Like as as you have seen that we are yes, using some sensor yes, in pre-stress. yes. In no, in the railway So sleeper for there is some no railway use. slippers, do we use some Yes, sensors so that we can get the data yes. In of the the railway, pre-tension wires in the railway slippers? sir, in the actually these the application of these sensors are so costly that they only use in the case of experiments only. So वहां पे क्या होता है ना, रेल के ऊपर लगा देते हैं हम लोग स्टेन गेजेस रेल के ऊपर, ठीक Okay. है। तो रेल के ऊपर लगाने से ही स्लीपर्स वाला काम और हो जाता है। वैसे रेल में स्लीपर्स में क्या होगा, बहुत होगा तो एक क्रैक हो जाएगा या वो टूट जाएगा। रेल Mm-hmm. के स्लीपर के टूटने से रेलवे कभी डिटेल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे उनका जो स्पेसिंग है बहुत कम कम पे है। और Mm-hmm. अगर हम वही पैसा को लगा दें रेलवे के स्लीपर्स के ऊपर, हमने स्लीपर्स को मॉनिटर कर रहे हैं प्रॉपर, तो क्या होगा कि हमारा जैसे आपका हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन वाले में आपका स्लीपर बनता है, ठीक है। अब वहां Mm-hmm. पे किसी एक में लगा के चेक कर लीजिए कि आपके पीसेस जो वो आ रहे हैं स्लीपर्स आ रहे हैं उनकी क्षमता क्या है। बट अब उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन जो आपके स्लीपर्स है ना, वो क्या है कि जैसे हीट बढ़ेगा, जैसे स्पीड बढ़ेगा, या इसमें क्या है ना, इरोजन जो होता है, जो क्षरण होता है ना, वो बहुत तेज होता है, जो डीके होता है ना, और वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे कभी भी आज तक की रेलवे की घटनाओं में कभी भी स्लीपर का योगदान नहीं रहा, स्लीपर का कोई योगदान नहीं रहता है, हमारा रेल ही डिटेल होता है, रेल ही और टेढ़ा हो गया या वो फट गया टूट गया ऐसे होता है। तो रेलवे का ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अभी पैसा का सबको दिक्कत है, तो वो लोग क्या करता है ना, सारा पैसा इन्हीं पे, एक तो उनके पियर्स के अलाइनमेंट पे खर्च करता है लोग, बियरिंग पे खर्च करता है, और जो पैसा बचता है ना उसको रेल के स्ट्रेस को चेक करने में, उसके टिल्ट को चेक करने में लगा देता है। तो स्लीपर तक बात नहीं आती, और ऐसा कोई फेल्योर अभी तक, ऐसा कोई बड़ा फेल्योर रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने इस तरह के स्लीपर्स में सेंसर ऐसे नहीं लगाए हैं। हाँ, कंपनी में जब यार्ड में बन रहा होता है तब हम लोग लगा देते हैं, जस्ट चेक करने के लिए कि इसमें कितना आ रहा है, जैसे सर आपने देखा। हाँ सर, अभी आपने बोला ना कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो इरोजन बहुत फास्ट होता है। हाँ, हाँ, तो मतलब डू वी हैव एनी मेजरमेंट कि हाँ किस रेट से इरोजन हो रहा है? फॉर दैट वी कैन यूज सम सेंसर। बिल्कुल, एग्जैक्टली आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया कि अगर सेंसर आपने लगा दिया, स्ट्रेन गेज लगा दिया, ठीक है, सपोज करिए अपने बॉटम में 10-15 जगहों पे आपने लगा दिया, और अब आप देख रहे हैं कि जब गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है, व्हेन द ट्रेन इज मूविंग द स्पीड ऑफ 100 एंड टेम्परेचर इज 47 डिग्री, तो जो स्ट्रेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, ठीक है। ओके। उस स्ट्रेन से जो थर्मल कोएफिशिएंट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कितना हो रहा है, ठीक है। अच्छा। ये अगर आप इसको, अब आप ये डेटा 30 दिन तक ले लीजिए, 30 दिन के बाद अब आप देखिए कि क्या ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ओके। अगर ये लीनियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट जैसे एक लेवल के बाद टेम्परेचर और स्पीड एक साथ बढ़ता है ना, तो वहां पे चीजें नॉन लीनियरिटी की तरफ चली जाती हैं।
अच्छा। और ये आप रिकॉर्ड सिर्फ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम से ही कर सकते हैं, जहाँ पे आप कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रहे हो। रेगुलर मॉनिटरिंग। हाँ, रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा ना कि ग्राफ में क्या ये हम्म, लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो हम्म, ये आप सिर्फ इसी से कर सकते हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन और जो आपका स्पीड है, जैसे क्या होता है ना, लोहा पूरा गर्म है, ठीक है, अब आप थोड़ा जो मार रहे हैं ना वो कितना तेज मार रहे हैं, तो तभी ना फैलेगा वो। ऑब्वियसली। हाँ, तो जो गर्म हुआ वो हुआ ड्यू टू हीट, और जो हथौड़ा का मैं बात कर रहा हूँ वो हो रहा है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ व्हील्स, ठीक है। अब वो कितना फैलेगा, ठीक है, एकदम गर्म है और बहुत स्पीड से आप गाड़ी लेके चले गए, तो एक्सपेंशन उसमें बहुत ज्यादा होगा, तो वहीं पे डीले होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो उसमें बीच में गैप दिया होता है वो एक लिमिटिंग गैप है, उसमें तो गैप दिया दे नहीं सकते। और पैसेंजर के कंफर्ट को देखते हुए उस गैप को और कम किया जा रहा है, बार बार और कम किया जा रहा है, ताकि वो जो होता है खट 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 करके आवाज आती है बार बार, तो उस गैप को वो और कम कर रहा है। सर मान लीजिए, हाँ सर मान लीजिए अगर हमारे पास कोई आरसीसी बिल्डिंग है एंड वी वांट टू फाइंड कि उसमें कितना कोरोजन है, स्टील रेनफोर्समेंट, बिकॉज वहाँ टेम्परेचर से ज्यादा कोरोजन होता नहीं, वी जनरली हैव वाटर एंड अदर एलिमेंट एनवायरमेंटल। CO2, अब वहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और HCl, तो तीन चीजें हैं, दो चीजें हैं, वो दोनों होता है। हाँ। अच्छा। अगर या तो सलाइन एयर है कोस्टल एरिया में होगा, या जहाँ पे शहरी एरिया है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वहां पे होगा। और मान लीजिए अगर इनिशियल कंस्ट्रक्शन में ही कुछ ज्यादा पानी डाल दिया हो, एज यूजुअल इन इंडिया जो होता हाँ, है। नहीं नहीं, आपकी कहने मतलब अगर वहाँ पे वाटर को हम पोर्टेबल वाटर ना यूज करके हमने एसिडिक वाटर यूज कर लिया, या एग्जैक्टली। ऐसा। हाँ, तो तो मतलब उसको उसके लिए मेजर आप करने का तरीका भी वही है। हाफ सेल पोटेंशियोमीटर आता है। नहीं नहीं, हाफ सेल पोटेंशियोमीटर एकदम सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, 200 रुपए का पर टेस्ट आता है, वो कर लीजिए, उससे मालूम हो अच्छा। जाएगा। हाफ सेल मैं शुरू में बताया था वो कि अगर आप एनडीटी कर रहे हैं ना, तो उसमें हाफ सेल पोटेंशियोमीटर आता है, जैसे बैटरी का पानी होता है, बैटरी हाँ हाँ जब आप हाँ। घर में जो इन्वर्टर में बैटरी लगती है ना, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट होता है आपकी बिल्डिंग्स में, एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली तो हाँ। अगर उसको Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस या O2 एक साथ मिला, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और HCl, इनमें से आप Cl माइनस ले लीजिए, या यहाँ पे O2 प्लस ले लीजिए। इन दोनों को अगर आप पानी से मिला दिए किसी भी तरह से, तो वहां पे जैसे बैटरी में एक जगह डिस्चार्ज जमा होता है, हमारे हाँ। उसके जो जो उसका हेड्स होता है ना, ऐसे ही आप देखिए कोरोजन में एक जगह आके जमा जाता है, एक जगह से रिड्यूस जाता है, हाँ हाँ, इरोड होता है, हाँ सही। इरोड होता है। तो ये क्या होता है ना, ई प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस जो है वो आकर के आपके दूसरे वाले पॉइंट पे जमा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही एक बार आज जैसे आपने कंक्रीट कास्ट किया, हनी कॉम्बिंग है या सही से वाइब्रेटर नहीं चला, वाइट्स रह गए, और वहां पे सलाइन एयर है, मतलब कोस्टल एरिया है, वहां से समुद्र में जो हवाएं चल रही हैं वो नमक लिए हुए अपने साथ है, या जो हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे उन पोर्स को पार करके उस रेनफोर्समेंट तक पहुंचेगा ना, इमीडिएट कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे ना कोस्टल एरिया में आपका बहुत 50 का दिया जाता है, और पोर्टेबल वाटर यूज करते हैं। तो जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा, एक बार ये स्टार्ट हुआ, तो जब तक आप उसको पूरा साफ करके पूरा का पूरा आप जो इतना डिपोजिशन हुआ है उनको आप हटाएंगे नहीं ना, तब तक वो लगातार होता ही रहेगा अंदर अंदर अंदर। जैसे बैटरी के पानी को होता है ना, तो बोलते हैं उसको गर्म पानी डाल के साफ कर दीजिए, ये बैटरी खराब नहीं होगा। यही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि ओके। आपको रस्टिंग पकड़ में रस्टिंग कैसे पकड़ में आएगा, अगर आपको कहीं भी क्रैक दिख रहा है, कवर के पास में कहीं भी क्रैक दिख रहा है, तो वो सिंपल सा है कि वहां रस्टिंग चालू हो गया है, इमीडिएटली उसको आप अटेंड करिए, नहीं तो वो अगले 1-2 साल में वो रस्टिंग बहुत पूरा फैल जाएगा हर जगह पर, कैंसर की तरह। तो उसको आप एंटी रस्ट ट्रीटमेंट करिए, और फिर रस्ट रिमूवल लगाइए, एंटी रस्ट कोटिंग करिए, करके बढ़िया एक रिच मोटार मिला के वहां पे प्लास्टर करा दीजिए, तो इससे आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये रडार वाटर लेवल सेंसर है, जैसे बताया मैंने कि ये एक वाटर लेवल सेंसर है, इसको लगा दीजिए आप, तो ये क्या कर रहा है कि नेविगेशन सिस्टम होता है, ये नेविगेशन सिस्टम होता है, जैसे अभी आपके उसका क्या जो आपके जीपीएस में होता है ना कि हमारा अभी लोकेशन क्या है, और आज के 2 दिन के बाद जीपीएस क्या करता है, हर एक सेकंड आपका लोकेशन व्हाट्सएप पे आप 15 मिनट का लोकेशन शेयर करिए, तो क्या करता है ना, हर एक सेकंड आपका लोकेशन चेंज होता है, तो बताया जाता है कितना आपने मूव किया। ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आपका एक एंगल निकाल के कितना आपका वाटर लेवल कितना चेंज हुआ, वो सेल्फ रिफरेंस बना के आपको एक जगह दे देगा कि कितना टिल्ट हुआ, कितना डाउन गया। अगर टिल्ट भी होगा तब भी पता चल जाएगा आपको,
और डाउन गया तो हिमाचल में जाएगा। ये पूरा सेटअप है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये पूरा सेटअप है। यहाँ पे हमने एक सिम लगाया, ये वाला आप देख रहे होंगे। यहाँ पे सोलर पावर, ये लिथियम आयन बैटरी लगा दी, ये हमारा सोलर है, ये लगा के कहीं ब्रिज के आसपास कहीं चिपका दिया, चिपका के सारे सेंसर्स को लाके इसमें जोड़ दिया मैंने। और अब ये जो सिम है ना, ये आपको आपके सर्वर पे डेटा देता रहेगा, कितना डिफ्लेक्शन हुआ, कितना स्ट्रेन हुआ, कितना ये हुआ, ये सब देता रहेगा आपको। और आप आराम से, ये देखिए मैंने एक मॉडल बनाया है, ये आपका पूरा इस तरह से आपके सर्वर रूम में आराम से, जैसे ये है, यहाँ पे आपने लगा दिया, ये गेटवे है जो आपका सिम कार्ड वाला सिस्टम है, यहाँ से जाएगा आपके सर्वर पे, सर्वर से आपका ऑफिस जहाँ पे भी होगा वहां पे आ जाएगा। कोई डैमेज है आप तुरंत अपने आदमी को भेजिए, जाके ठीक कराएगा उसको। ये है, मेरा टाइम अप हो गया। सर सर टाइम है हमारे पास? सर आप कंटिन्यू कर लीजिए, कुछ बाकी हो नो इशू। ओके, तो ये कुछ केस स्टडीज है हमें लगता है। इसमें जैसे अगर मान लीजिए कि उनको कुछ ही मोमेंट के लिए चाहिए, जैसे अभी सिवान और मुजफ्फरपुर में कुछ हम लोगों ने लोड टेस्ट किए, अगर उनको सिर्फ इमीडिएट जानना है कि हाँ आपका कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है इस लोड के लिए, या कितना वाइब्रेशन आ रहा है, तो 20, 40, 60, 20, 40, 60, 80, 100, इनमें हम गाड़ी को डायनामिक लोडिंग दे करके, डायनामिक वो दे करके, स्पीड दे करके, और इसका वाइब्रेशन और ये सब कुछ चेक कर लेते हैं। चेक करके उनको डेटा दे दिया गया, लेकिन वो इंस्टेंट डेटा है, इट विल नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। इट विल से कि हाँ आपका इतना टाइम तक का इतना लोड के लिए सेफ है ये। बट अगर हवलदार 100 रुपया लेकर के अगर ओवरलोडिंग करा जाएगा, देन हमारा कोई गारंटी नहीं है और हमें पता भी नहीं चलेगा। बट अगर स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग आपने लगा दिया है, तो वहां पे क्या होगा कि अगर कोई ओवरलोडिंग गाड़ी गया रात में, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ ये टाइम पे इतना लोड के गाड़ी इसमें से गया हुआ है, क्योंकि आपके पास डिफ्लेक्शन वर्सेस लोड का ग्राफ तो है ही है। इतना लोड देने पर इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो अगर डिफ्लेक्शन मिल गया तो लोड आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये जो है इंस्टेंट सिस्टम है। तो अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू Hello. ऑल फॉर योर क्वेश्चंस। यस सर। Thanks, sir. Thanks a lot. So, can you hear me, sir? Yes, you're clearly audible, sir. Just basically, I was sitting at another place. Yes, sir. Oh, Sir, can you share your PPT because it's very informative? Yeah. Sure. It will be honor. I will share my video. Okay, sir. Okay, thank you. I will share Dr. Saurabh. Please collect from him. So thanks, Dr. Anjani. It was a very nice and interactive session. In fact, I enjoyed it. And Thank you. And it is always good to get learning from the field experience. So as you are in a field and you are doing a very good job, and I have seen that the bridge at, I think, UK. Yeah. How did you carry out the research and then again retrofitting of that? That is marvelous. And I think students should get all these kind of things and all these kind of learning, because in our theory classes we don't have these kind of Right. things. So ये जो जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी practically students के पास पहुंचनी चाहिए. And I definitely I will invite you physically to interact with the students. Thank you very much, sir. It's honor. It's honor for me. Actually, I was the faculty in the college earlier. After my MTech, I was the faculty in the college where Dr. Saurabh was there too. Dr. Saurabh was my colleague in an engineering college. Okay. So if you invite, then it will be very nice to you, sir. तो हिमाचल घूमने का मौका मिलेगा. मैंने हिमाचल में बहुत सारे काम किए हैं. अच्छा. बद्रिकाश्रम से लेकर के जो आपका भी एक ब्रिज बन रहा है, चिनाब ब्रिज, वहां पे भी हमने रेलवे के लिए काफी काम किया. बद्रिकाश्रम में गया हूँ.
हाँ, I have बद्रिकाश्रम में एक बिल्डिंग टिल्ट हो रही थी, उसको पूरा हम लोगों ने वो किया है। मतलब मेरा ही उसका कंसल्टेंसी और एग्जीक्यूशन दोनों रहा हुआ है। ओके ओके, जो बिल्कुल लास्ट में है वो 3 हाँ, और जो 4 बिल्कुल लास्ट में है, हाँ, जो उसके पास में वो पूरा टिल्ट हो रहा था, जो साधक आश्रम ना, साधक का आश्रम करके एक है इनका। हाँ 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 हाँ, तो वो मैंने पूरा उसको एक्चुअली उनका रॉक एंकरिंग करना था, बट किसी मूर्ख ने रॉक एंकरिंग सही से किया नहीं, ओके। तो उसकी वजह से, और G+4 तो उनका तुरंत बन गया बिल्डिंग। तो पुणे के कोई कंसल्टेंट थे सेटी करके, ही वाज ऐसे ही कॉन्फ्रेंस में कहीं उन्होंने मेरा लेक्चर देखा हुआ था, अच्छा तो उन्होंने वो इंटरनेट से वो निकाल के पूरा नंबर और फिर मुझे कांटेक्ट किया, और लकली वो ठीक भी हो गया, अभी वो कोई दिक्कत नहीं, वो चल रहा है। मैंने लास्ट ईयर विजिट किया था। अच्छा, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही अच्छा हाँ जगह है। हाँ, बस पहुंचना मुश्किल है। पहुंचना मुश्किल है, तो मतलब मैं 16 में आया था वहां से, मैं आने वाला था आपके कॉलेज में, बट टाइम का थोड़ा कॉन्स्टेंट था, इसलिए मैं आने पर। डॉक्टर सौरभ वॉज देयर एट दैट टाइम। तो अभी आप लेक्चर के लिए बुलाएंगे तभी मैं आ पाऊंगा। के लिए, और ये जितना यस सर, यू ऑडिबल सर। ओके ओके, कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी। So thanks on behalf of Department of Civil Engineering and also from the JP University that you shared your valuable information and your experience and also with your time which we have taken from your busy schedule. So thanks to all of